Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. We have started the Langmuir-Hinshelwood mechanisms. Langmuir-Hinshelwood mechanisms, LH mechanisms. So let us consider general reactions we have discussed earlier. That is A plus B gives the product. So according to LH mechanisms, A in the gaseous phase, A in adsorb, then B move towards the surface and get adsorbed, and then A in adsorb and B in adsorb form interact and gives the product in adsorb form, and then B in adsorb form and it desorb and move away from the surface of the catalyst. So these are the steps of Langmuir-Hinshelwood mechanisms we have discussed earlier. So as we have studied that A adsorbed and B adsorbed can be expressed in terms of fractional surface coverage. A adsorbed is expressed in terms of theta A, and B adsorbed it is expressed in term of theta B. So rate of reactions R is proportional to theta A and theta B. R rate is equal to KR theta A and theta B. यहाँ तक हम कल कर चुके हैं. Now this theta A and theta B can be expressed in terms of adsorption isotherms. Fractional surface coverage. Fractional surface coverage can be expressed in terms of adsorption isotherms. Different types of adsorption isotherms can be used. Different types of adsorption isotherms can be employed, can be used. Let us most commonly used one. Most commonly used is the Langmuir adsorption isotherms. अब Langmuir adsorption isotherm इसकी भी different types हैं. Competitive है, non competitive है, dissociative है, non dissociative है. तो हम सिर्फ एक ले लेते हैं. That is the competitive adsorptions. Let's consider competitive adsorptions. Of A and B. So competitive adsorption isotherms for A theta A will be equal to A of PA and 1 plus A of PA plus B of PB, where A is adsorption equilibrium constant for A and B is adsorption equilibrium constant for B. Similarly for theta B will be equal to B of PB 1 plus A PA and B and PB. So this is competitive adsorption isotherms for B. So now putting the value of theta A and theta B in equation number 1, we get the rate expression. Equation 1 किस तरह है? R is equal to KR theta A and theta B. अब इसमें वैल्यूज लगा लेते हैं. So it is KR theta A है A PA 1 plus A PA plus B PB, और theta B B PB 1 plus A PA plus B PB. कंबाइन कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स को. KR A and B
and PA and PB divided by 1 plus APA plus BPB and square. So that is the red expression. It is the red expression for catalytic reaction of two gases only. This is red expressions for catalytic reactions of two gases on the solid surface following the Langmuir-Hinshelwood mechanisms. On solid surface following LH mechanisms. So the depending on the value of absorption coefficient of A and B, there are two cases. Depending on absorption coefficient of A and B, और absorption coefficient वो कौन से हैं, यानी A और B. These are absorption coefficient. So depending on absorption coefficient of A and B, there are two cases. There are two cases. Number one, when both are weakly adsorbed. Cases तो बहुत से both are weakly adsorbed, both are strongly adsorbed. One is weakly, second is strongly. तो different हो सकते हैं, लेकिन हम simple cases लेते हैं. Two cases when both are weakly adsorbed means A and B, these are much smaller than 1. Then denominator में ये terms ignore हो जाएंगे. So the denominator 1 plus A PA plus P BP BPB will be equal to 1. क्योंकि ये 1 से बहुत smaller है, तो therefore जब smaller value इसी के साथ multiply करते हैं, so it becomes further smaller. So therefore in denominator the PA and BPB can be ignored. Then we get the red expression. The red expression become as red is equal to KR A B PA and PB. R rate is proportional to PA and PB. So this is a second order reactions. Second order reactions. किस केस में? When the absorption coefficient of both the gases are weak, small, then the surface catalyzed reaction according to Langmuir-Hinshelwood mechanism follow the second order kinetics. दूसरा केस when one is strongly adsorbed and other is weakly adsorbed. One is strongly adsorbed, second is weakly. Or in other words, the absorption coefficient of one is high and absorption coefficient of other is low. Let's suppose absorption coefficient of A, absorption coefficient of A, that is A, is high, much larger, greater than 1, and absorption coefficient of B is smaller. B is smaller than 1. Then in denominator of equation number 1, that is 1 plus B
APA plus BPB, दिस विल बी इक्वल टू, यानी 1 से हाई है तो 1 को भी इग्नोर कर देते हैं, इसको भी इग्नोर करेंगे तो ये हो जाएगा APA. सो रेट इक्वेशन इज रेट इज इक्वल टू KR और AB PA PB और डिनोमिनेटर ये 1 प्लस APA प्लस BPB स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर ये हो जाएगा APA के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज KR AB PA PB डिवाइडेड बाय APA स्क्वायर और KR AB divided by A square and PA PB and PA square. तो ये A एक ख़त्म हो जाएगा और एक यहाँ से P ख़त्म हो जाएगा. सो रेट becomes as KR B over A and P of B and P of A. So this is first order. This reaction is order is 1 with respect to B and order is -1 with respect to P of A. So overall order is 0. So this equation shows that rate of reaction decreases with pressure of A. According to this equation, increase in pressure of A will decrease the rate of reaction when A is strongly absorbed. Equation number 2 अगर ये हो जाए, according to equation number 2, increase in pressure of A will decrease the rate of reaction. Increase in pressure of A will decrease the rate of reactions. So this effect is called retardation by reactant. Retardation by reactant. As rate is inversely proportional to, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, rate is proportional to PB and PA. So rate is inversely proportional to PA. So increase in pressure of A will decrease the rate of reactions. So this is called retardation of the reactant, retardation by the reactant. So this retardation is due to adsorption coefficient. And adsorption coefficient of 1 is A or B. A is much higher than 1 or much higher than B. This retardation can also be caused by high pressure. So high pressure of one of the reactants also causes retardations. High pressure of one reactants also cause retardations. यानी सिर्फ एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से रिटार्डेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी एक रिएक्टेंट्स के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो दिस आल्सो काज अ रिटार्डेशन इफेक्ट. दिस आल्सो काज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शंस. उसको भी हम देख सकते हैं मैथमेटिकली किस तरह. फॉर एग्जांपल, एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ PB, यानी इस केस में अगर हम A को ले लेते हैं कि प्रेशर ऑफ A, when pressure of A is higher, then it causes a retardation effect. So for example, at constant pressure of B, the rate of reaction increases with increase in PA. Rate of reaction increases with
increase in pressure of A. Up to a certain value. Up to a certain value. और उसके बाद जब further increase करते हैं, then there will be a retardation. Further increase in pressure of A will cause a decrease in rate. So that will be retardations by reactants. यानी रिटार्डेशन सिर्फ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट की वजह से नहीं है. एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट also causes a retardation effect, and high pressure of one of the reactant also causes a retardation of the rate. So इसको मैथमेटिकली देख लिख सकते हैं. If B is constant, pressure of B is constant and pressure of A is variable, then rate varies with pressure of A. फिर इसमें दो केसेस हैं. Number one, when PA is very small, when PA, that is pressure of the A is very small, तो फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो रेट इक्वेशन है इसमें 1 प्लस ए पी ए प्लस बी पी बी, ये किसके बराबर हो जाए, ये स्मॉल है तो इसको इग्नोर कर देते हैं. सो इट बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस पी बी, 1 प्लस बी एंड पी बी, ये हो जाएगा. सो रेट रिएक्शन वो क्या बन जाएगा, इस ये वैल्यू रेट इक्वेशन में लगा लेते हैं. जो इक्वेशन नंबर 1 था, 1 है या 2 है देख ले. इक्वेशन क्या है वो, रेट इज इक्वल टू के आर, और कौन से इक्वेशन था वो, ए बी पी ए पी बी और 1 प्लस ए पी ए प्लस बी पी बी, इस इक्वेशन में लगा लेते हैं. So we get rate is equal to KR A B P A P B divided by 1 plus B P B square, ये हो जाएगा. अब चूंकि P B constant है, pressure of B is constant, as P B हमने constant रखा है, तो ये कांस्टेंट है, बी ऑलरेडी कांस्टेंट है, 1b कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे. और ये के आर और ए बी ये भी कांस्टेंट है, यानी ये लिख सकते हैं आर के आर ए बी और पी ए पी बी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट आर. रेट इज प्रोपोर्शनल टू पी ए एंड पी बी. क्योंकि ये पी बी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू पी ए. So it means when pressure is low, when pressure of reactant A is low, then rate of reaction is proportional to pressure of A. Rate of reaction increases with pressure of A. It means rate increases with increase in pressure of A up to certain limit, up to certain value. दूसरी conditions, when PA is high, yes, number 2, when PA is much higher, तो फिर क्या होगा, 1 प्लस ए पी ए प्लस बी पी बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए पी ए. तो अब इस इक्वेशन में लगा लेते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू लगा लेते हैं.
ये इक्वेशंस क्या बनेगा, R इज इक्वल टू के आर ए बी पी ए पी बी एंड ए पी ए स्क्वायर, that will be equal to kr ab and a square and pa pb and pa square। तो एक a ख़त्म हो जाएगा, के आर बी ओवर ए, और एक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो पी बी डिवाइड बाई पी ए। सो रेट इज़ प्रोपोर्शनल, अगर बी को कांस्टेंट रखें तो ये सारे कांस्टेंट, सो रेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए। तो इस तरह अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं, यानी हाई प्रेशर कैन आल्सो causes a retardations and high adsorption equilibrium adsorption coefficient can also cause the retardation of the reactions. The value of PA for which the rate of reaction is maximum, यानी अगर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं इस तरह, रेट और प्रेशर ऑफ ए, तो जब प्रेशर ऑफ ए कम है देन द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए, इस तरह ये वाला एट लो प्रेशर ऑफ ए, और हाई प्रेशर पर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। it means that rate increases with pressure of A reaches to maximum up to certain limit, up to certain value, and then at high pressure the rate is inversely proportional to A, so further increase in pressure of A will decrease the rate of the reaction। so ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर इस region में P of A is low, so therefore rate is directly proportional, rate increases with increase in pressure of A। और इस region में यहाँ पर PA is high, so at high pressure of A the rate there is a retardation effect। जिस प्रेशर पर रेट मैक्सिमम है that is R maximum rate, so यहाँ पर pressure of A is PA maximum, यहाँ पर ये इस प्रेशर को कहते हैं PA maximum, यानी pressure of A at which the rate becomes maximum, pressure of A at which rate becomes maximum is called PA max, pressure of A or max। तो इस PA max के बाद retardation starts। After PA max the rate of reactions, after PA max rate of reactions decreases with pressure of A, with further increase in pressure of A, so this is retardation by the reactants। At this point retardation by the reactant starts, at this point retardations by reactants starts। अब ये रिटार्डेशन कितना है वो हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, यानी ये सारा ये जो हमने डिस्कस किया है इसको हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिराइवेशन इन्वॉल्व है और लेंथी है, तो इसलिए वो वीडियो के साइज़ पर बढ़ जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैथमेटिकल डिस्कशन वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।